Assalamualaikum बच्चों. I hope you also survived the second lecture of microelectronics fabrication technology, and now we are going to discuss. Now we are going to discuss the third lecture related to microelectronics fabrication technology. In the previous lecture, we were discussing about the growth of silicon wafers or the silicon ingots, and the technique we used that we discussed was Chakralski technique, in which the very first step was related to the formation of electronic grade silicon that acts as the melt layer, that acts as a melt in the Chakralski technique, and from that the and from that with the help of that electronic grade silicon, the silicon ingot of a particular dimension or particular crystallographic orientation was achieved, and we discussed about uh, the presence of the dopants and how doping is being done, and what are the factors that affect the doping, and we discussed the effective segregation coefficient along with equilibrium segregation coefficient for different impurities. That was the first method that we discussed, that we have already discussed for the synthesis of or the correct word to use is the preparation of silicon crystals or the silicon ingots of particular crystallographic orientation. The second method that we are going to discuss, and that is also for the silicon growth, is the float zone process. The float zone process is the advantage of the Czochralski technique, that it has a much lower contamination level as compared to that of Czochralski technique, and we will see further that how it is so. Um, in this case, the basic operators is composed of a seed crystal in a high purity polycrystalline rod. The seed crystal is at the bottom, is held in a vertical in the bottom, and is held in a vertical position, and is rotated. These with the help of the seed holder. Uh, with the help of the seed holder, the rod is enclosed. The whole of the apparatus is basically enclosed in a the whole of the apparatus is enclosed in a quartz envelope with inert atmosphere, so that the external contamination does not react with silicon. Um, in uh, in in the case of Czochralski technique, the RF coils eated the whole crucible. There was a crucible present, whereas in the case of float zone process, no crucible is present, and there is a rod with the help of with the help of and there is a rod of polycrystal high purity polycrystalline rod, and when the operation is started, or when the process started, a small zone, let's say a few centimeter of this polycrystalline rod is kept melted with the help of the radio frequency heaters, and it is moved upward, so that this floating zone traverses the length of the rod. The seed crystal in this case is also a single crystal of a particular orientation, and above that is the polycrystalline rod. This RF coils travels from the seed crystal along the length of polycrystalline rod. मीन्स एक सीड क्रिस्टल होता है, उसके ऊपर एक पॉलीक्रिस्टलाइन हाई प्योरिटी का रॉड होता है, ठीक है. अब जो सीड क्रिस्टल है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन के, लेट्स से 100 और 111 प्लेन, ठीक है. अब जो RF कॉइल्स हैं उनकी मदद से हम इसको सीड क्रिस्टल से ऊपर जाते हुए हम पॉलीक्रिस्टलाइन रॉड को हीटअप करते हैं. उसको
ठीक है। सो जो फ्लोटिंग जोन है, जो मोल्टन जोन है, दैट ट्रेवर्सेस द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है। अब जो सरफेस टेंशन होती है मोल्टिंग और ग्रोइंग में, ठीक है, वो उसको बेसिकली होल्ड करके रखती है। मेल्टिंग और द ग्रोइंग सॉलिड फेसेस के दरमियान जो सरफेस टेंशन क्रिएट होगी वो बेसिकली उस रॉड को, ये जो मोल्टन सिलिकॉन है उसको होल्ड करके रखेगी। ठीक है। जैसे जैसे ये जो फ्लोटिंग जोन या जो मोल्टन जोन है अब अपवर्ड मूव करेगा, जो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन फ्रीजेस, सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन नीचे बनता जाएगा और एक सीड क्रिस्टल की एक्सटेंशन के तौर पर वो बन जाएगा। जैसे जैसे हम जो आर एफ कॉइल्स हैं उनकी मदद से हम पॉलीक्रिस्टलाइन रॉड को हीट अप करना शुरू करेंगे सीड क्रिस्टल के पास से। सीड क्रिस्टल की एक्सटेंशन होती जाएगी एज अ बिग इंगॉट टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है। ये जो आपके पास आर एफ कॉइल्स हैं और जो वोल्टेज जोन है ये बेसिकली सीड क्रिस्टल के पास से मूव करना शुरू करेगा और ये इस तरह से मूव करता करता ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। सो दैट कि जो भी सीड क्रिस्टल की पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होगी वो ही अडॉप्ट कर लेगा आपका पॉलीक्रिस्टलाइन जो रॉड है, जो रॉड है। नाउ द थिंग इज कि मोस्टली सिलिकॉन फ्लोट जोन प्रोसेस को या फ्लोट जोन प्रोसेस को तब प्रेफर किया जाता है when we need materials with a very high resistivities as compared to that of Czechoslovakia technique। और Czechoslovakia technique को ज़्यादातर मीडियम resistivities के लिए यूज़ किया जाता है और it is also used for certain purification of the crystals also। ठीक है। सेकेंडली ये कि हमने शुरू में बात की थी कि फ्लोट जोन प्रोसेस में द कंटेमिनेशन लेवल इज़ लोअर एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ Czechoslovakia टेक्निक। ठीक है। अब ठीक है। इसकी इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि इन दिस केस या फ्लोट जोन प्रोसेस के केस में क्रोसिबल नहीं है। सो जो ऑक्सीजन की कंटेमिनेशन हमारे पास सिलिकॉन के केस में आ रही थी फ्रॉम द क्रूसिबल, वो हमारे पास फैक्टर जो है निकल जाता है। ठीक है। बट इट इज़ अ हाई इट 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 बिकॉज बट एज़ कम्पेयर टू आपका जो फ्लोट जोन चिक्रॉल्स की टेक्निक है, दिस प्रोसेस इज क्वाइट एक्सपेंसिव। सो द फ्लोट जोन क्रिस्टल्स जो है हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं हाई पावर डिवाइसेस में, हाई वोल्टेज डिवाइसेस में, सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे हमें हाई रेजिस्टिविटीज़ मटीरियल्स चाहिए होते हैं। Now, as far as the dopant concentration is concerned, ठीक है, let's have a look at the figure that is on the right hand side. Okay, in this case, let's suppose that the initial uniform doping concentration in the rod is C naught. ठीक है। L is the total length of the length of the molten zone that is at a distance of x along the length of the rod. L is L is basically the length of the molten zone. Okay, and A is the cross sectional area, and the cross sectional area. Um, now uh, as the zone traverses the distance, as it crosses a distance dx, the amount of the dopant added the in this case, let's say S is the amount of the dopant. Let's say S is the amount of the dopant present in the melt zone. Then the change in the amount of the dopant present in the melt zone is given by the equation 16. And in this case, the factor
this vector this vector, or the first vector of the equation 16 gives the amount of the dopant added to the zone as it added to the zone as it traverses the uh, dx to its advancing end. ठीक है, एडवांसिंग एट ऊपर वाला एंड. ठीक है, ऊपर वाले एंड पे अमाउंट ऑफ द डोपेंट प्रेजेंट कितनी है वो हमें पहले फिगर से मिलती है. ठीक है. सेकेंडली जो दूसरी फिगर है ये बेसिकली जोन के दो पार्ट्स हैं ना, एक ऊपर है और एक नीचे है. ठीक है, एक वो है जो सीड क्रिस्टल की तरफ है और एक वो है जो कि हमारी पॉलीक्रिस्टलाइन रॉड की तरफ है. ठीक है, जो पहला हमारे पास फैक्टर है डेट रिप्रेजेंट्स के अमाउंट ऑफ द डोपेंट ऊपर वाले एंड पे या एडवांसिंग एंड पे क्या है. ठीक है, और नीचे वाला जो सेकंड फैक्टर है डेट रिप्रेजेंट्स के अमाउंट ऑफ द डोपेंट रिट्रीटिंग एंड पे, मतलब ऊपर जाते हुए एंड पे क्या है. ठीक है, और इन दिस केस के इज़ द इफेक्टिव सेग्रीगेशन कोफिशिएंट. सो दैट अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें और एस नॉट को रिप्रेजेंट एस नॉट इज़ इंटीग्रेट करें फ्रॉम एस नॉट टू एस, जबकि एस नॉट इज़ द अमाउंट ऑफ द डोपेंट इन द जोन when it was first formed on the front end of the rod. ठीक है, फ्रंट एंड ऑफ द रॉड, सामने वाले सरफेस के ऊपर जो उसका डोपेंट जोन था वो कितना था इनिशियली. ठीक है, सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो वी विल कम अप विद द इक्वेशन नंबर 17 एंड 17a. ठीक है, सो एंड द सी एस एंड इन दिस केस अब इस इक्वेशन को व्हेन वी विल बी रीअरेंजिंग एंड putting up the value of s in cs is equal to ke s divided by a rho dl, where rho is the specific where rho is the specific density of silicon. ठीक है, इन दैट केस जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट द इफेक्टिव सेग्रीगेशन कोफिशिएंट फॉर द फ्लूइड जोन प्रोसेस. ठीक है, अब ये जो अभी तक दो टेक्निक्स हमने डिस्कस की हैं, फ्लूइड जोन प्रोसेस और चिक्रॉल्स की टेक्निक. ठीक है, they can also be used to remove the impurities from the polycrystalline material. ठीक है, polycrystalline silicon material basically हमने ये देखा है कि दोनों केसेस में जो मेल्ट है उसके अंदर हमारा ये जो ओरिजिनली हमारा जो पॉलीक्रिस्टलाइन रॉड होता है उसके अंदर हमारे जो डोपेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी आर ग्रोइंग. ठीक है, अब इसके केस में हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो ऑलरेडी जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसमें से, इसका मतलब है कि जितने भी डोपेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर बीइंग रिजेक्टेड इनटू द मेल्ट. ठीक है, इसका मतलब है कि वट एवर वी आर गेटिंग इज बाय प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट या वट एवर जो हमारे पास आउटर प्रोडक्ट आई है वो बेहतर क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी आर गिविंग इट. बट जो क्रॉल्स की टेक्निक के केस में हमारे पास प्योरीफिकेशन का प्रोसेस ज़्यादा अच्छी तरह हो सकता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोट जोन प्रोसेस. अगर हम एक क्रिस्टल को प्योरीफाई करना चाह रहे हैं तो वी विल प्रेफर द चिक्रॉल्स की टेक्निक. ठीक है, till now we have discussed two methods, float zone process and the Czochralski technique for single crystal silicon. Now we are going to discuss the process for the
process for gallium arsenide. The starting materials for gallium and arsenide. Gallium arsenide is chemically pure gallium and arsenic. Gallium arsenide is a combination of basically two different materials, and its behavior is different from the single materials such as silicon. ठीक है. अब जब दो different materials को combine करना है तो it will require some different strategies and some different considerations. ठीक है, as compared to silicon. um, जो गैलियम हमें नेटिव गैलियम अचीव होता है वो हमें बाय प्रोसेस में होता है, जिसमें जोन प्रोसेस रिफाइनिंग वगैरह करके वी गेट द एलिमेंटल गैलियम. ठीक है. जबकि आर्सेनिक जो है वो हमारे पास आयरन Fe एस के फॉर्म में होता है. ठीक है, जिसमें से हम वी एक्सट्रैक्ट द एलिमेंटल आर्सेनिक. ठीक है. सो okay, बच्चों. After obtaining the elemental gallium with a purity of 99.9% and elemental arsenic, the next step is the preparation of polycrystalline gallium arsenide. In the same way as we prepared electronic grade silicon for which acted as a seed layer. So in this case we have to prepare polycrystalline gallium arsenide, but the basic issue that comes in this is that the vapor pressure of gallium is different and arsenide is different. Basically, and we know that the vapor pressure is an indication of the liquid evaporation rate. So this means that gallium evaporates at a different rate and at temperature, and whereas arsenide evaporates at a different rate and the temperature. For this purpose, for the preparation of polycrystalline gallium arsenide, two different furnaces are used with two different temperatures. One of the furnace is kept at a temperature of approximately 600 degrees C, and the other furnace is kept at a temperature of approximately 1200 degrees C. ठीक है. All of the process takes all of this process takes place in the evacuated tube that is made up of sealed quartz. It is sealed and with the quartz tube, and it's got two different temperature furnaces, high purity silicon, and the boards that are being used in this case, instead of a crucible, a boat is being used, and a high purity arsenic is placed in the graphite boat, and it is heated to temperature of 610 to approximately 620 degrees C. On the other hand, in the second furnace, we place up gallium that is of high purity, and it is heated slightly above the gallium arsenide melting temperature. uh, the, the reason behind is that using the two furnaces, heating one of them to 610 degrees C and the other to 620 610 degrees C, and the other to the high slightly above melting temperature, is basically is because of two reasons. Firstly, under these conditions the vapors from the arsenic melt flow are transported. The conditions the conditions favor the transport of the arsenic vapors to the gallium melt, where they react to form the way they react with the gallium melt to form gallium arsenide. Secondly, such high temperature also prevent the decomposition of gallium arsenide while it is being formed in the furnace. So basically, there are two reasons to use the different furnaces, and keeping one of the furnace slightly above the melting temperature of gallium arsenide, and keeping one at the low temperature, is that कि जो हमारे पास आर्सेनाइड है वेपर फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट वेपर प्रेशर टू द गैलियम मेल्ट. ठीक है. अब गैलियम जैसे जैसे आर्सेनाइड जो है रिएक्ट कर आर्सेनाइड वेपर्स जो है रिएक्ट करेंगे वो गैलियम के साथ गैलियम आर्सेनाइड बनना शुरू हो जाएगा, और अंडर दीज कंडीशन इट विल नॉट डिकम्पोज बैक टू इट्स बाय प्रोडक्ट टू इट्स गैलियम एंड आर्सेनाइड प्रोडक्ट्स. So in this way we obtain after the gallium arsenide melt is formed, it is then cooled back to its room temperature to obtain high purity gallium arsenide. And this is the raw material that acts as the crystal growth of gallium arsenide.
The two basic mechanisms that are being used for the gallium arsenide crystal growth, one is the Czochralski technique and one is the Bridgman method. We already know a lot about the Czochralski technique, and it is somewhat similar to that we studied in the in the case of silicon. Uh, But if mostly the Bridgman technique is being used for gallium arsenide synthesis, but if we want large ingot gallium arsenide with a large diameter or in larger ingots, then we prefer Czochralski technique. In the case of this, we see that almost the apparatus is same, whereas it consists of a seed layer and the seed crystal and the RF coils. However, the decomposition in order to prevent and however there is a factor that was not present in the case of silicon synthesis, and that it cannot since silicon cannot decompose back to its byproducts, because single cell is a single element, whereas gallium arsenide, it can decompose back to its byproducts. For to prevent this decomposition of the melt during the crystal growth, the liquid or the melt is encapsulated with boron trioxide caps, B2O3 layer, that is about approximately 1 centimeter thick. The molten Basically, the molten boron trioxide is inserted in a gallium arsenide surface, and it acts as a cap over the melt, and it prevents the decomposition of gallium arsenide as long as the pressure on its surface is higher than 760 torr or 1 atmospheric pressure. The pressure that is maintained by boron trioxide is suitable so that it prevents the decomposition of the gallium arsenide. Uh, the and the second difference is that in the case of silicon Czochralski technique, we saw that we use silica crucibles, silica susceptors, or the silica susceptors, uh, whereas or the crucible, whereas in this case the graphite crucible or the graphite susceptor is being used, because boron trioxide that is being used for the capping layer, it can easily dissolve silicon dioxide. So to prevent the reaction of the boron trioxide with the silica dioxide with the crucible material is being replaced by the graphite. In this way, there no reaction occurs between the graphite susceptor and the boron trioxide cap. Uh, The second method that we are going to discuss is the Bridgman method. It is basically a two zone furnace. Uh, the two zone furnace means as two different furnaces, or two zone furnace means the furnaces are at somewhat different temperatures. I used the left hand side of or the zone 1 is held at a temperature of approximately 610 degrees C to maintain the required overpressure of arsenic, whereas the right hand side is held just above the melting point of gallium arsenide, approximately 1240 degrees C. The seal tube, the whole of the tube is made up of in which both of the materials is placed is made up of quartz, and the boat in which the gallium arsenide melt that is being produced as the method was discussed earlier, uh, the boat is made up of graphite. In the operation, and when the operation is being carried out and when the system is turned on, the boat is loaded uh, with the the boat is loaded with polycrystalline gallium arsenide,
whereas arsenic is kept on the other side of the tube in zone 1, whereas the boat is placed on zone 2. As the boat is moved towards the right, as the furnace it is a as the furnace move towards the right, the melt cools at one end. Okay, usually there is a seat placed and left under the to establish uh, usually हमारे पास क्या होता है कि हम एक सीड प्लेस कर देते हैं गैलियम आर्सेनाइड मेल्ट के साथ, ठीक है, सो दैट हमारी जो भी पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन है वो हमें अचीव हो जाए, ठीक है। अब होता ये कि जो फर्नेस है उसको मूव किया जाता है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, सो दैट जो आपका मेल्ट है वो एक साइड से कूल डाउन होता जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है 1242, ठीक है, हमारे पास जो गैलियम आर्सेनाइड है अभी इस टाइम पे इट्स एट अ टेम्परेचर ऑफ दिस टेम्परेचर, ठीक है। हम ये जो दो फर्नेसेस हैं जोन 1 और जोन 2, हम इसको इस साइड पे मूव करते हैं। दिस मीन्स पहले इट वाज एट अ हाई टेम्परेचर एंड देन इट गोज टू द लोअर टेम्परेचर, ठीक है। द ग्रेजुअल फ्रीजिंग ऑफ द मेल्ट अलाउज, इस तरह से एक ग्रेजुअल फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे आ जाता है। सो ये जो ग्रेजुअल फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है इसकी वजह से हमारे पास जो सिंगल क्रिस्टल टू प्रोपगेट एट द लिक्विड क्रिस्टल इंटरफेस, so in this so in this case सो इस तरह से ये जो है अब हमारे पास जो सिंगल क्रिस्टल इन गॉट सीड क्रिस्टल के थ्रू ये गैलियम आर्सेनाइड की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होती है या पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल से सिंगल क्रिस्टल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो आर्सेनिक हमने प्लेस किया हुआ है इधर, वाई इज़ इट सो, वाई नॉट जस्ट अ सील क्रिस्टल। हमने पहले बात की है कि गैलियम और आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट वो वेपर प्रेशर डिफरेंट है, ठीक है। सो जब हम higher vapor pressure of gallium explain the higher अब होता हमारे पास ये है कि अभी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट हमने बात की थी कि राउंड अबाउट मेल्टिंग पॉइंट पे के करीब ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है 1240 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब होता ये है कि जो सरफेस ले एट द टेम्परेचर अभी अचीव भी नहीं हुआ तो जो सरफेस लेयर होती है गैलियम आर्सेनाइड की, बेसिकली वो डिकम्पोज हो जाती है गैलियम और आर्सेनिक में। अब आर्सेनिक का वेपर प्रेशर डिफरेंट है और आर्सेनिक और गैलियम के वेपर प्रेशर्स डिफरेंट है एंड आर्सेनिक इज़ मोर वॉलेटाइल एज़ कम्पेयर टू गैलियम, ठीक है। उसके केस में ये होता है कि जो आर्सेनिक है वो वॉलेटाइल होने की वजह से देयर इज़ सम लॉस ऑफ आर्सेनिक इन द मीडियम, ठीक है, जिसकी वजह से जो गैलियम आर्सेनाइड जो मेल्ट है वो हमारे पास गैलियम रिच हो जाता है। अब गैलियम रिच मेल्ट को अपनी रिक्वायर्ड कंपोजिशन पे लाने के लिए वी यूज़ दिस आर्सेनिक मेटल जो हम उसमें प्लेस करते हैं सेकेंड में। अब बात आ जाती है इसमें ब्रिजबैन मेथड में और जो क्रॉल्सकी टेक्निक में और बेसिकली गैलियम आर्सेनाइड में डोपिंग की। इन द केस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड कैडमियम एंड जिंक are the two important materials for p-type doping, ठीक है, whereas selenium, silicon and whereas whereas selenium, silicon and tellurium are used for n-type, ठीक है। Just like the same case, in this case also this equilibrium segregation coefficient is also defined in the same way as we defined it for silicon, and from this table we also note that the equilibrium segregation coefficient for most of the materials for most of the dopants is less than 1.
सो अभी तक हमने देखा है कि सिंगल क्रिस्टलिन गॉड्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। अब जब क्रिस्टल ग्रो हो जाता है, चाहे वो सिलिकॉन का हो या गैलियम आर्सेनाइड का हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चाहे वो ब्रिजमेंट मेथड से हो, फ्लोट जोन से हो, ट्रिक क्रॉल्स की टेक्निक से, वट एवर द टेक्निक है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले काम किया जाता है कि जो सीड होता है आपका, चाहे वो कोई भी मेथड हो, उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और जो ना सिर्फ सीड रिमूव कर दिया जाता है, बल्कि जो दूसरा एंड होता है इनकॉट का, वो भी रिमूव कर दिया जाता है टू गिव इट अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। इसके बाद जो उसकी सरफेस है उसको ग्राइंड किया जाता है, ताकि वो उसको एक बाकायदा एक डायामीटर उस मटेरियल का डिफाइन हो सके, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि जो इनकॉट होता है वहाँ पे कुछ फ्लैट रीजन्स डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। जो आप ये इस तरह कह सकते हो कि रगड़ाई करके आप फ्लैट रीजन्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसमें दो तरह के फ्लैट रीजन्स होते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये प्राइमरी फ्लैट है और एक ये सेकेंडरी फ्लैट है। प्राइमरी फ्लैट जो कि एक बड़ा फ्लैट रीजन होता है इन द लेंथ, ठीक है। अब इसका जो बेसिक पर्पस ये होता है कि वो ये होता है कि ये ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स में ये जो है ना, ये बाकी डिवाइसेस को उस क्रिस्टल के साथ, बाकी डिवाइसेस को इस क्रिस्टल के साथ ओरिएंट करने के लिए काम होता है, ठीक है। और जो दूसरा सेकेंडरी फ्लैट होता है, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है। ये इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। अब जिस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लैट्स दोनों हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लैट के दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री का होगा, तो इसका मतलब होगा कि आपके पास जो सिलिकॉन है डेट इज़ एन एन टाइप सिलिकॉन विद द सरफेस ओरिएंटेशन ऑफ 111, ठीक है। इसी तरह इफ़ यू हैव गॉट ओनली प्राइमरी फ्लैट, देयर इज़ नो सेकेंडरी फ्लैट, देन इट्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विद 1 ओरिएंटेशन, ठीक है। आफ्टर दैट जो आपका, अगर आपके सेकेंडरी और प्राइमरी फ्लैट में देयर इज़ एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, सो दिस मीन्स इट्स एन एन टाइप 100 सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, एंड इफ इट्स एन एंगल बिटवीन द बोथ ऑफ द फ्लैट्स इज 90 डिग्री, so it will be a p type semiconductor with 100 orientation, ठीक है। अब इन फ्लैट्स को डिफाइन करने के बाद जो डायमंड सॉ या डायमंड सॉ होता है, ठीक है, उसकी मदद से हमारे जो सिलिकॉन इनगॉट था उसको वेफर्स की फॉर्म में काट लिया जाता है, ठीक है। अब इसके फ्लैट्स को डिफाइन करने के बाद जब इसको हम वेफर्स के फॉर्म में काटते हैं, तो बेसिकली 4 वेफर पैरामीटर्स होते हैं जो कि डिटर्मिन होते हैं। एक तो सरफेस ओरिएंटेशन क्या है, वो हमें फ्लैट से पता चलता है, ठीक है। और थिकनेस कितनी होगी, ये थिकनेस डिपेंड करती है वेफर डायामीटर पे। ये नहीं होता कि अगर मतलब हर पर्टिकुलर वेफर डायामीटर के लिए एक पर्टिकुलर थिकनेसेस डिफाइंड होगी, ये नहीं कि आपका अगर डायमीटर टू माइक्रोमीटर है, तो आप उसको 10 नैनोमीटर की आप उसको 10 नैनोमीटर की थिकनेस दे दो, या आप उसको 2 सेंटीमीटर की थिकनेस दे दो, डैट्स नॉट अलाउड, ठीक है। और और फिर ये भी चीज़ भी डिफाइन होती है कि एक जो वेफर है उसकी एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक उसकी कितनी वेरिएशन है थिकनेस में, ठीक है। डैट इज़ नोन एज टेपर। एंड और ये भी डिफाइन होता है कि जो कर्वेचर है सर्फ वेफर का, जो कि मेजर होता है फ्रॉम द सेंटर टू द एज, वो कितना है, ठीक है। डैट इज़ नोन एज द बो, ठीक है। आफ्टर स्लाइसिंग, अब स्लाइस जब हो जाते हैं वेफर्स, द बोथ साइड ऑफ जो वेफर्स की दोनों साइड्स होती हैं वो लैप होती हैं, ये रैप होती हैं मिक्सचर ऑफ
ग्लिसरीन एंड Al2O3, ठीक है. सो बेसिकली ये प्रोड्यूस करती है हमारे पास थिकनेस यूनिफॉर्मिटी विद इन 2 माइक्रोमीटर प्रोड्यूस करके. ये लैपिंग जो प्रोसेस होता है इसकी वजह से कुछ इम्प्योरिटीज़ इंड्यूस हो सकती हैं विद इन द वेफर, ठीक है. बट वो ऑन द सरफेस, बट वो सरफेस पे होती हैं, ठीक है. और वो केमिकल एचिंग जब हम करते हैं उसकी वेफर की, तो वो रिमूव हो जाती हैं इजीली, ठीक है. इसके बाद जो है प्रोसेस स्टेप आता है, डैट इज़ द पॉलिशिंग, ठीक है. इसके केस में ये इसलिए होता है कि हमारे पास एक स्मूथ स्पेकुलर सरफेस आ जाए, जहाँ पे हम इजीली डिफाइन कर सकें अपनी डिवाइस फीचर्स को लिथोग्राफी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली वो ये है कि गैलियम आर्सेनाइड, हमने जैसे बात की थी कि जब हम जो सिलिकॉन SiO2 क्रूसिबल यूज़ करते हैं, देखिए सबसे क्रॉल्स की टेक्निक जब हम अप्लाई करते हैं उसके अंदर सिलिकॉन की सिंथेसिस, सिलिकॉन इनगॉट के बनाने के लिए हमने देखा था कि वहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड कुछ इम्प्योरिटीज़, ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं दैट आर विद इन द बल्क ऑफ द सेमीकंडक्टर, लेकिन वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है. जबकि गैलियम आर्सेनाइड के केस में हमने देखा है कि हमने B2O3 के बोरान ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन को रोकने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड ने उसको ग्रेफाइट क्रूसिबल के साथ रिप्लेस कर दिया. तो सो ऐसी कोई भी इम्प्योरिटीज़ जो ऑक्सीजन से रिलेटेड है वो गैलियम आर्सेनाइड में प्रेजेंट नहीं होती हैं. सो गैलियम आर्सेनाइड इज़ अ रिलेटिवली मोर फ्रेजाइल मटेरियल एज कम्पेयर टू डेट ऑफ सिलिकॉन. सो ये जो सब बेसिक हमारे जो फैब्रिकेशन, जो स्लाइसिंग का स्टेप है या जो शेपिंग का स्टेप है, ये ज़्यादा केयर मांगते हैं फॉर सिलिकॉन एज कम्पेयर फॉर गैलियम आर्सेनाइड एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, ठीक है. हैंडलिंग इसकी इट्स क्वाइट टफ फॉर गैलियम आर्सेनाइड एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, ठीक है. और दूसरी बात ये कि ऑलरेडी वी नो कि जो सिलिकॉन इंडस्ट्री है डेट इज़ फार अहेड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इंडस्ट्री, ठीक है. Because it is because of the advantages that we have got, its abundance in nature and everything, okay. So we are going to wind up our lecture over here, and if you have any questions, do contact me so that we can discuss it over any mean you are comfortable with. So take care. Allah Hafiz.